We'll start in another 5 to 10 minutes. Let us wait for some more people to join. Okay, welcome to today's class. So today we'll be discussing about IR spectroscopy. If time permits, we'll also go on to one type of molecular spectroscopy as well. Okay, but first I wanted to uh, finish up IR. Now IR spectroscopy has different kinds of aspects. Okay, first is the physical part, that is your vibrational spectroscopy. So
before dealing with instrumentation and its applications and how you're going to use it to find the functions, what are the different frequencies, those applications, I also want you to have a few working knowledge of the equations involved, about the kind of diagrams that we are usually seeing in physical chemistry. So it will have two components, the physical chemistry aspect and the organic chemistry aspect. Okay, so we'll be discussing all these. Before this particular presentation starts, I want to discuss first the theory behind IR spectroscopy. So first I want to ask you guys, what is your concept of IR spectroscopy? The physical chemistry portion, I want to ask, what is your idea about it? So anyone can just start speaking. Let's make it quick today so that we can cover more portion. Any one of you can unmute yourself and start speaking about it. What is the first thing that comes to your mind when you say IR spectroscopy? What does it deal with? Vibration of the molecule. Yes, exactly. So vibrational energy of the molecule and how it differs. Okay, so any interaction of IR radiation with the molecule, they can give rise to molecular vibrations and can perturb the vibrational energy levels, and that perturbation gives rise to your infrared spectrum. Now vibrational spectroscopy has been observed in experimentally in the IR region. Okay, it can be used in IR spectroscopy as well as Raman spectroscopy. Okay, but the only difference between the two type of spectra for infrared and Raman spectra is that IR is associated with the dipole moment. Okay, it is associated with the bonds, the dipole moment of the bonds, whereas Raman spectroscopy is associated with polarizability. Okay, it is associated with polarizability. Now we know any molecule is not just a rigid assemble of atoms. Okay, atoms are not just connected very rigidly, they can be flexible as well. Okay, the bonds are flexible. So imagine all the atoms connected to each other with springs. Okay, as if they are connected with each other like springs. So these springs can assume different positions, right? They can assume different positions also, like that of springs. You know that springs have some kind of tension in them. Okay, some kind of constant force constant is present in the springs, so they have different strengths. Like these strings can be hard, they can be soft, and they can be easily stretchable. So accordingly the vibrational frequencies will because of the varying strength of the varying strength of the bonds. So here we see that there are two types of vibrations that can occur for molecules. One, we can have a stretching vibration. Okay, the distance between two bonds can decrease or increase, and the bond axis won't change. If you have a bond axis, the bonds are being stretched like this. They can increase or they can decrease, or you can have the bonds like this and they can bend. Okay, so those are known as bending or deformation vibrations. One is the stretching vibrations and the others can be bending or deformation vibrations. So if you have a non-linear molecule, okay, if you have a non-linear molecule with n number of atoms, okay, if you have a non-linear molecule with n number of atoms, then they can have up to 3n minus 6 vibrational modes. Okay, write this down. If you have a non-linear molecule with n number of atoms, they can have 3n minus 6 possible vibrational modes. Okay, they can have 3n minus 6 possible vibrational modes. And these can be responsible for the absorption of IR light. Okay, these can be responsible for IR light, but all these is theoretical. Okay, 3n minus 6 is all theoretical. For if this were possible, then methane, benzene, they would have more number of fundamental absorption bands. They will have more number of fundamental absorption bands, but this does not occur because some of these modes, they are IR inactive. Okay, some of the vibrational modes, although theoretically possible, they are IR inactive. So now let us see some examples of how these stretching bonds look like. How does the stretching modes work? I'm going to share my screen. Let's look at some theory first. There'll be a lot of equations. Only some equations will be important. So I will point them out and you will quickly note them down. Okay. I will highlight them on the screen and then you can note those down. No need to go into derivations for this part, but the equations are important. Okay. So this is the kind of, we talked of stretching.
Okay, now stretching can be of these kind of stuff: symmetric stretching, asymmetric stretching. So symmetric stretching is same kind. So if you have a water molecule H2O, you see that the OH bond is being stretched in this direction, and consequently the O is also being stretched towards this direction. In asymmetric stretching, this balance is lost. Okay, this balance is lost. So if you have a pull in this direction, a pull in this direction, this H is not being pulled in the direction, but rather it is being compressed. So this is known as asymmetric stretching. Similarly, you can have a bending kind of a vibration called as scissoring. So if you have OH molecule like this, they will move like this. Okay, they will move like this. Also, when does a molecule show an IR absorption? 3n-6 vibrations, but only a few of them are IR active. So what does it mean for a molecule to be IR active? A molecule is only IR active or active, okay, if it is having a change in dipole moment, if there is some change in dipole moment. Okay, also here you can see that the energy for asymmetric stretching is more than that of symmetric stretching and more than that of scissoring. Okay, it is more than that of scissoring. Let us take another example like that of a methylene group, CH2 group. Okay, so how does symmetric stretching occur here? If it is equally in both directions, if it is equally in both directions, and here if it is unequal, CH in one direction, another CH in another direction. Similarly, scissoring or symmetric in plane bending. If it is out of plane bending, then it is known as wagging. So scissoring and wagging. Also, you can have another kind of motion that is called twisting. So one CH goes here, another CH goes here. Okay. Another is rocking. Both of them in same direction. जैसे रॉक होता है, जैसे क्रैडल को रॉक करते हैं, वैसे एक डायरेक्शन में पहले गया, दूसरी डायरेक्शन में एक साथ जा रहे हैं. ठीक है. एंड ट्विस्टिंग मतलब दो अलग अलग डायरेक्शंस में आउट ऑफ प्लेन जा रहे. सो दीज आर द वेरियस मोड्स बाय विच स्ट्रेचिंग और बेंडिंग कैन टेक प्लेस. तो अभी हम लोग आते हैं कि व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, हाउ डज द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइक दिस. तो हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में सुना है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में सुना होगा. ऑल्सो यू नो दैट हार्मोनिक ऑसिलेटर का बेसिक जो फंडा है, दैट स्टार्ट्स विथ अ स्प्रिंग. ओके, दैट स्टार्ट्स विथ अ स्प्रिंग, एंड स्प्रिंग आते ही हमको हुक्स लॉ का वी शुड रिमेंबर. ओके, वी शुड रिमेंबर द हुक्स लॉ. तो हुक्स लॉ में हम लोग का क्या होता था, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. दैट इज हाउ यूज टू डिस्क्राइब द फोर्स. ओके, फोर्स ऑफ द स्प्रिंग माइनस के एक्स. ठीक है, जहां पे के है फोर्स कांस्टेंट. ओके, के इज द फोर्स कांस्टेंट. तो अगर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के हिसाब से हम लोग फोर्स देख रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल बी दिस, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. Okay, U is equal to half kx square, and this will be the expression for potential energy of one vibrating particle. ठीक है, it will be like one vibrating particle. And half kx square अगर हम लोग graphically उसको represent करें, then since it is like the equation for a parabola, हमारे जो vibrational frequencies का हम लोग करते हैं, usually if you are plotting the energies, they look like a parabola. You look like this U shaped. ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसे दिखता है, राइट. सो यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ u वर्सेस x. यू कैन राइट u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड ऊपर ये भी लिख सकते हो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स. तो ये एक कॉन्सेप्ट आप लोग में रहना चाहिए कि स्प्रिंग अगर हम लोग सोचे तो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल भी एक स्प्रिंग जैसा है. तो वी कैन रिप्रेजेंट दैट इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोलिक इक्वेशन, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है. Next, we'll not go much into these. Okay, we'll not go much into these. We'll go directly to the result for the frequency of vibration. Okay, what is the frequency of vibration? So nu is equal to 1 by 2 pi root over m. This is very important equation. 2.7 and 2.8 आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए. nu is equal to 1 by 2 pi root over of k by m. Okay, 1 by 2 pi root over of k by m. Similarly, nu bar is 1 by 2 pi c root over of k by m.
Okay, 1 by 2 pi c root over of k by m. Now here we are talking about one mass, इसलिए हमारा यहाँ पे हम लोग m ले रहे हैं, where m is the mass of the particle. But here we are talking about just one particle. If we have more than one number of particles, if we have a bond, bond में मतलब two atoms will be connected, ठीक है, उसके बीच में स्प्रिंग होगा, तो उसका मास हम लोग क्या लेंगे, हम लोग उसका रिड्यूस्ड मास लेंगे. रिड्यूस्ड मास विल बी म्यू, ठीक है, वो जो छोटा u टाइप का दिखता है म्यू. So mu will be the reduced mass. What is the formula for reduced mass? Can anyone say? Reduced mass का formula क्या होता है? Anyone has any idea? Yes, reduced mass का formula क्या होता है? Okay, so here we are about the two particle molecule. Same है, F is equal to minus kx, and when we are going down to the actual equation, let's ignore all of this part, you get a mu. Okay, mu is the reduced mass. ठीक है, mu is the reduced mass. So now reduced mass हम लोग क्यों कर रहे हैं? Because it is reducing the vibration of the two molecules to a single mass point. And वो mass point कहाँ पे located होता है? In the middle of the spring. Now if we were to construct the potential energy again, now again you will have a parabola, but instead of a single level, you will have so many different levels. So these are known as your vibrational energy levels. This is known as vibrational energy levels. And कोई भी vibration energy levels में से transition होगा, then you will have the line on the spectrum. You will have the line on the spectrum. So यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस इन्वॉल्व है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हैमिल्टनियन. जो लोग स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन करते हैं, दे डू द हार्मोनिक ऑसिलेटर डेरिवेशंस, तो हम लोग इसमें नहीं जाएंगे. We will just skip to the main, and here the main part. Okay, so I was asking you about reduced mass. When you have a m and you're substituting it with nu, then you will get something like this. So nu is actually m1 m2 by m1 plus m2. Okay, m1 m2 by m1 plus m2. So this is how it will look like. Okay, the final equation. ठीक है. And then if you're trying to construct the energy of a vibrational oscillator, harmonic oscillator, then you will get something like this. h nu हमको पता है, right? We know h nu is equal to h nu. यहाँ पे और एक quantized energy level आ जाता है, because the transition in the vibrational energy levels are all quantized. So यहाँ पे we used a quantum number n plus half. यहाँ पे nu लिखा है, बहुत लोग n भी लिखते हैं. n plus half h nu, where nu will be the vibrational frequency. Okay, where nu will be the vibrational frequency. एंड यहाँ पे सपोज ये वाला जीरो है, सपोज ये वाला टर्म हमने जीरो कर दिया, तो फिर भी हाफ एच न्यू रहेगा. सो दैट इज नोन एज जीरो पॉइंट एनर्जी. हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी का एक अपर लिमिट, का एक लोअर लिमिट है. ठीक है, इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू, न्यू एक मेंटेन होके होगा. सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज जीरो पॉइंट एनर्जी, वेयर द क्वांटाइजेशन इज फर्स्ट एनर्जी लेवल का जीरो है, देन you can still have some energy associated with the first or the ground state. ठीक है, so this is again how it looks like the parabolic equation. तो अगर आपको कहीं पे भी दिखा कि आपको vibration energy levels represent करने हैं, then you can just write about the harmonic motion. You can write about the equations. What is the equation? How does the structure of the vibration energy levels look like? And we have already talked about 0 point energy. The lowest energy level of a harmonic oscillator will be that with n is equal to 0. तो उसमें हम लोग को half h nu आ जाएगा. Now here we also come to the selection rule for vibrational spectroscopy. So selection rule for vibrational spectroscopy,
प्लस और माइनस 1। तो कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, कोई भी ट्रांजिशन ऊपर से नीचे सिर्फ एक ही लेवल तक जा सकता है, 1 to 2 जा सकता है, 2 to 3 जा सकता है, 3 से 2 फिर आ सकता है, ठीक है। सो प्लस और माइनस 1, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो 1 स्टेप एट अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ओके, गोइंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। एंड ऑफ कोर्स आई विल रिमाइंड यू कि जब भी चेंज इन डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल आता है, ओनली देन the vibration will interact with the radiation, and if it interacts, the selection rules have to be obeyed, okay, only the selection rules will be obeyed. ओके यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का. सो हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फर्स्ट excited state relative to the ground vibrational state? Okay, so this is given by this equation. Okay, this is given by this equation, n by n0, ठीक है. n कुछ भी, न्यू इज इक्वल टू 1 by n, न्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है. फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू e to the power minus delta E by kt, where E is the energy, k is the Boltzmann constant, T is the temperature. Okay, n nu is equal to 1 by n nu is equal to 0 is equal to exponential of minus delta E by kt. Delta E is the difference in temperature, ठीक है, delta is the difference in temperature. So we will stop here because this is the technical part, and then we will move to the more applied part. ठीक है, this is the physical chemistry portion along with all the equations. कैसे structure होता है, बस basic concepts पता होना चाहिए, इसका इतना details नहीं आएगा. बस आपको problems आ सकता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जैसे कि force constant दे दिया, दो masses दे दिए, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है शायद मास्टर्स इन केमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड दे दिया है, तो पोटेशियम का मास दिया है, क्लोराइड का मास दिया है, एंड फोर्स कांस्टेंट दे दिया है. तो वहां से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट. वहां से आप लोग फिर एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. बस यूनिट्स का ख्याल रखना है, ठीक है. आप लोग को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट के लिए क्या चाहिए, फोर्स कांस्टेंट चाहिए और रिड्यूस्ड मास चाहिए. तो जो मासेस आपको दे दिया होगा उसको पहले आप रिड्यूस्ड मास फाइंड आउट करेंगे, न्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद वहां से आप लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं if you know the force constant. Okay, if you know the force constant. Okay, so let us move back to our original presentation जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस. अच्छा, हम लोग अभी तक फिजिकल के एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे, अभी हम लोग एप्लीकेशंस में जाते हैं. तो आईआर रीजन्स जो मैंने आपको कहा था कि आपको वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी सबका ध्यान रखना है कि डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपीज में क्या होता है. वैसे आईआर रीजन में भी सिर्फ आईआर कहने से नहीं होता, उसमें बहुत सारे अदर रीजन्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि नियर आईआर, मिडिल आईआर, फार आईआर. ऑल्सो द मोस्ट यूज जो रेंज है इट इज दिस 2.5 to 115 माइक्रोमीटर्स के वेवलेंथ में ये वाला पर्टिकुलर रेंज इज वेरी यूजफुल. ओके, इट इज वेरी यूजफुल. Now what are the differences between the various types of IR spectra? जो हम लोग बोल रहे थे नियर IR, मिडिल IR, फार IR, वो किस किस चीज में यूज किया जाता है. तो अगर हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बैंड देख रहे हैं देन नियर IR इज बेटर. हम लोग अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रा देख रहे हैं देन फार IR region is there. And if we are seeing this vibration rotational spectra, when there is a mixing of vibration and rotational modes, हम लोग तब middle IR region को जाएंगे, हम लोग तब middle IR region को जाएंगे. ना IR थियोरी जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, एक तो होता है सिलेक्शन रूल्स, ठीक है. सिलेक्शन रूल्स में हमको वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर चाहिए, एंड वी नीड द मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, and we need the dipole moment to change. So all these conditions, when they are satisfied, only you will get an IR spectra. Number of possible vibrational modes हमने पहले डिस्कस किया था 3n-6, ठीक है, 3n-6. उसके हिसाब से क्या क्या पॉसिबल है, सीजरिंग, बेंडिंग, वो सब हमने डिस्कस किया.
Now, vibrational frequency also equation we have discussed. Now, what can influence the vibrational modes? Okay, what can influence the vibrational modes? एक है जो solvent हम लोग use कर रहे हैं, ठीक है, कौन से फेज में सैंपल है, सॉलिड फेज में है, लिक्विड फेज में है, ठीक है, उसके हिसाब से भी चेंज होगा. कपल्ड इंटरैक्शंस, अगर सॉल्वेंट या ऐसे कोई इंप्योरिटी है जो फिर कपल कर रहा है उसके साथ इंटरेक्शन में, तो उसका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज होगा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन ऑल्सो चेंज, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन लीड टू एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन विद इन द मॉलिक्यूल्स, बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल्स. तो जब कुछ भी एसोसिएशन हो रहा है, मतलब उसका बॉन्ड लेंथ फिर स्ट्रेच हो रहा है. बॉन्ड लेंथ के स्ट्रेचिंग में अगर कोई भी ऑल्टरेशन आए, मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, ठीक है. वैसे ही फर्मी रेजोनेंस, टू और मोर बॉन्ड्स दे विल कम इनटू रेजोनेंस, दे विल रेजोनेट विद द, जब भी वाइब्रेशंस होते हैं, those two bonds may start their vibrations may start resonating with each other, so you will get a doublet, ठीक है. ये यूजुअली एल्डिहाइड्स में पाया जाता है. so you will see how the fermi resonance works in aldehydes. and of course electronic effects, तो जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कुछ अफेक्ट कर रहे हैं. so we will see all these factors. now we have already discussed this, ठीक है, कि क्यों जब मॉलिक्यूल आईआर अब्सॉर्ब करता है, देन वाइब्रेशंस दे मस्ट कॉज अ नेट चेंज इन डाइपोल मोमेंट. नाउ व्हाई दे शुड दे हैव टू चेंज द डाइपोल मोमेंट? क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है, उसका एक खुद का जो एक फ्लक्चुएशन हो रहा है मॉलिक्यूल का, उसका अगर जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग जब बोल रहे, दे हैव एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. नाउ dipole moment भी fluctuate कर रहा है, and this kind of IR radiation is also fluctuating, ठीक है. only if the frequency of the radiations are matching with the vibrational frequency, तभी radiation absorb करेगा, नहीं तो छूट जाएगा. okay, क्योंकि if this condition is not satisfied, then amplitude of the molecular vibration में change ही नहीं हो, ठीक है, there will not be a change, तो radiation won't be absorbed. okay, so this fluctuations in the IR radiation and the fluctuations in the dipole moment, they must be equal. okay, they must match. so we have discussed this equation, ठीक है. तो physical chemistry aspect हम लोगों ने थोड़ा discuss कर लिया अभी. they are joined by a spring. we have also discussed about the reduced mass and how it affects the frequency. यहाँ पे हम लोग wave number में हम लोग frequencies देख रहे हैं. so these equations are very important, and यहाँ से problems आते हैं, numerical problems आते हैं. okay, now we were discussing about how many number of main vibrations are there. so these are different for linear and non-linear, ठीक है, these are different for linear and non-linear. now हम लोग जो -5 और -6 देख रहे हैं, they are actually representative of the translational and rotational modes, ठीक है. how many degrees of freedom are there? for non-linear you have 3 translational, 3 rotational. so vibrational में total vibration से सिर्फ vibration अगर देखो तो 3 and -6 होता है. वैसे ही हम लोग अगर एक लीनियर मॉलिक्यूल देख रहे हैं, उसमें रोटेशन का एक एक्सिस फिक्स्ड हो जाता है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हियर विल बी रेस्ट्रिक्टेड. सो इट विल हैव ओनली 2 रोटेशनल मोड्स. सो टोटल में से हम लोग 5 माइनस करते हैं, एंड यू गेट द वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द फंडामेंटल वाइब्रेशन. कितने वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, दिस इज द हाइपोथेटिकल टोटल, जहां से हम लोग को सिर्फ कुछ ही आईआर एक्टिव होता है. सो यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है प्री रिक्विजिट्स फॉर आईआर एक्टिव. एक फ्रीक्वेंसी मैचिंग, दैट इज रेजोनेंस. एक डाइपोल मोमेंट चेंज ऑल्सो, और एक इंपॉर्टेंट जो है डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल चेंज also should be the same as the direction of the electric field vector. so these are the 3 kinds of criteria that is important for IR active radiation. यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहे, तो फिर कौन से वाइब्रेशंस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आईआर एक्टिव होंगे? दिस कैन बी अ क्वेश्चन, ठीक है. तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इफ यू आर चॉकिंग आउट द स्ट्रेचिंग एंड द बेंडिंग मोड्स, तो कैसे आएगा? ठीक है. सो हियर इज द कार्बन डाइऑक्साइड स्पेक्ट्रम. ओके, दिस इज हाउ एन आईआर स्पेक्ट्रम लुक्स लाइक. इट हैज वाई एक्सिस में रिलेटिव ट्रांसमिटेंस एंड वेव नंबर इन द एक्स एक्सिस. यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज जितने भी होंगे आपको वेव नंबर्स में कैलकुलेट किया जाता है. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर representation. So let us have a look at how the carbon dioxide stretching and bending works.
कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, एंड वन ऑफ द carbon and the middle carbon can go in a direction that is opposing one of the oxygen wala stretching. So this will lead to asymmetrical stretching. ठीक है. Similarly you will have a scissoring bending. ठीक है, you can have a scissoring bending. तो ऐसे लीनियर मॉलिक्यूल है तो ऐसे बेंडिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर आउट ऑफ प्लेन वाला भी हो सकता है. सो ओनली अ फ्यू ऑफ द मोड्स विल बी एक्टिव. ओके, so you can see the bending modes here and you can also see the stretching bones, asymmetric stretching. Now यहाँ पे जो symmetrical वाला stretching है, क्योंकि अगर ये इस तरफ गया और ये इस तरफ गया तो फिर तो सारा कुछ कैंसिल हो गया, राइट. 13-40 सेंटीमीटर में जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होना चाहिए वो इतना आईआर एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इतना उसका डाइपोल मोमेंट चेंज ही नहीं हुआ है. बट एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्योंकि देयर इज अ नॉट यूनिफॉर्म काइंड ऑफ अ मोशन, इसलिए डाइपोल मोमेंट थोड़ा चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से इतना शार्प वाला पीक आ गया 2350, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. ठीक है. So you can say that for linear molecules also the symmetric stretching are usually IR inactive क्योंकि they are having cancelling out, okay, cancelling out of the vibrations, and this leads to no change in the dipole moment. This leads to no change in the dipole moment, whereas asymmetrical stretching can lead to change in dipole moment, and hence this is IR active. Okay, the asymmetrical stretching is IR active. We have already talked about the selection rules. ठीक है, IR एक्टिव क्या होता है, IR इनएक्टिव क्या होता है. सो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन. नॉन लीनियर के लिए क्या होता है, ठीक है. सो वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. इन प्लेन, आउट प्लेन, ट्विस्टिंग, वैगिंग, रॉकिंग. इन प्लेन में वैगिंग और रॉकिंग होता है, ठीक है. आउट प्लेन में ट्विस्टिंग होता है, ठीक है. एंड एसिमेट्रिक एंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस. Now we were discussing about what things can influence the vibrational frequency. तो हमने solvents की बात की, ठीक है, हमने hydrogen bonding की बात की, and now we are also going to talk about something which affects the vibrational frequency. Now frequency का जो है हम लोग को equation से ही मिल जाता है. अब equation में क्या था, nu is equal to 1/2 pi root over of k by m. ठीक है. वेव नंबर देखने को जाए तो 1/2 pi c रूट ओवर ऑफ k by m, एंड m कैन ऑल्सो बी न्यू, दैट इज अ रिड्यूस्ड मास. ठीक है, यहाँ पे भी वही वाला लिखा है. अब इक्वेशन से ही हम लेट अस फाइंड आउट कि क्या क्या कैन इन्फ्लुएंस द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू आवर माइंड इज मास. ठीक है, रिड्यूस्ड मास. अब रिड्यूस्ड मास जब if it is increasing, that one what happens to the vibrational frequency. Now reduced mass के साथ vibrational frequency का रिश्ता क्या है, inversely proportional है. तो जब हमारे the attached atoms are getting bigger, ठीक है, if they are getting bigger the reduced mass will be increasing. okay, reduced mass increase करेगा मतलब frequency और wave number decrease करेगा. ठीक है. So that is why the first criteria that you are seeing is that of masses of attached atoms. अगर CH है तो उसका वेव नंबर ज्यादा है. जैसे जैसे अटैच्ड मासेस इंक्रीज कर रहे हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है बिकॉज द रिलेशनशिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. Similarly, strength of chemical bond. Now strength is related to your force constant. ठीक है, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम लोग स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं. उस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट हम लोग यूज कर रहे हैं. सो that spring is what, उसका जो भी वाइब्रेशन होगा that is related to the strength of the bond, right? That is related to the strength of the bond. तो strength of the bond is related to your force constant, and force constant का क्या रिश्ता है wave number से? It is directly proportional. So as the strength of the chemical bond increases, the wave number will also increase. Okay, it will also increase. तो strength of the chemical bond हम लोग कैसे उसको जज कर रहे हैं? Depending on whether it is a single bond or a multiple bond, right? Whether it is a सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड. तो सिंगल अगर है तो जैसे CC बॉन्ड होगा, यहाँ पे एग्जांपल दिया है 1200 सेंटीमीटर इनवर्स. जैसे ही डबल बॉन्ड हो गया 1650 हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया और थोड़ा ज्यादा बढ़ गया 2150 वेव नंबर पे आ गया. नाउ स्ट्रेंथ एंड दीज मल्टीपल बॉन्ड जैसे हम लोग बोल रहे हैं, दीज आर आल्सो रिलेटेड टू योर हाइब्रिडाइजेशन.
ठीक है, अल्काइंस में क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp मल्टीपल बॉन्ड्स अगर हम लोग देखें किसी एल्कीन में तो वो sp2 होगा, सिमिलरली सिंगल है तो sp3 होगा, ठीक है। So bonds will be stronger when multiple bonds are there. तो sp greater than sp2 greater than sp3. Similarly अगर इस alkyne में एक हाइड्रोजन अटैच्ड है या alkene में हाइड्रोजन अटैच्ड है या यहाँ पे alkane में हाइड्रोजन अटैच्ड है, depending on the kind of hybridization they will also change. ठीक है, so sp का hybridized this thing will be much higher than that of sp3. Now we come to resonance. Okay, resonance में क्या हो जाता है, if there is a resonance it will, अगर हम लोग जैसे conjugation देखे थे UV visible spectroscopy में, this lowers the energy to vibrate the bond, this lowers the energy to vibrate the bond. जितना resonance हो जाएगा, जितना conjugation होगा, उसका energy कम होता जाएगा, इसलिए जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स में है या फिर आइसोलेटेड कीटोन देखोगे और उसके साथ कुछ एक अल्फा बीटा अनसैचुरेशन देखोगे, देन यू विल see that there is a decrease in the frequency, you will see that there is a decrease in the frequency. Now we have talked about solvents, ठीक है, solvents and what kind of phase the sample is in, ठीक है. So let us discuss a little more about this. Now solvents can bring about either a frequency shift या फिर a band splitting, ठीक है, it can have a frequency shift or a band splitting. बहुत लोगों में interactions भी हो जाते हैं, ठीक है, they can also interact in different kinds of solvents and because of interactions उनका कुछ decrease हो जाएगा, जैसे कि acetone can interact in various solvents. जब तक हेक्सेन में है, हेक्सेन क्या है, नॉन पोलर है, एसीटोन पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट में उसका कोई डिफरेंस नहीं होगा, उसमें कुछ इंटरैक्शन या एसोसिएशन नहीं होगा, तो उसका वैसे ही इंटैक्ट रहेगा. जैसे ही क्लोरोफॉर्म आ जाता है, थोड़ा पोलरिटी आ जाता है, उसका इंटरैक्शन शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसका बॉन्ड्स वीक हो जाता है, एसीटोन के अंदर के बॉन्ड में थोड़ा वीकनेस आ जाएगा, तो स्ट्रेंथ जैसे ही थोड़ा डिक्रीज किया, वेव नंबर भी डिक्रीज किया. सिमिलरली एथेनॉल, अब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाएगा तो फिर अगेन एस्ट्रॉन के अंदर जो बॉन्ड्स होंगे वो भी वीक होना शुरू हो जाएंगे, सो दैट इज व्हाई एथेनॉल में और भी कम हो जाता है, ठीक है, एथेनॉल में और भी कम हो जाता है. सिमिलरली फेज क्यों मैटर करता है, फेज वी हैव टॉक्ड अबाउट वेपर स्टेट, लिक्विड स्टेट, ओके, सॉलिड स्टेट. नाउ इन वेपर स्टेट इट इज इन द प्योर फॉर्म, ओके, हम लोग whatever we are seeing on the basis of functional groups. So functional groups in aldehydes is CO bond, ठीक है, C double bond O bond is the main bond. So in the vapor state that is in the pure form, तो pure form में there is no kind of impurity. As soon as it comes to liquid state, then the strength of the bonds will decrease a little, ठीक है, it will begin to take different shapes, ठीक है, तो फिर उसका association थोड़ा stronger हो जाएगा, but due to this association within a particular acetone molecule, वो functional group का that will start to weaken, that is why the strength of the CO bonds will start to weaken in the liquid state, and that is why the frequency shifts are noticed towards a decreased wave number. Now coupled interactions की हम लोगों ने बात किया था, so what is coupled interactions? Now if you are having common vibrating groups, ठीक है, if you are having common vibrating groups या फिर if you are having groups that have identical energies, okay, if you are having identical energies then that is also known as coupling, or symmetrical species के vibrations, so that is also known as coupled interactions. Again, hydrogen bonding, we have already talked about hydrogen bonding, we will see more examples of it, but I will tell you this, intermolecular और intramolecular hydrogen bonding में difference है. जब हम लोग कोई peaks देखते हैं, you can clearly differentiate between what is intramolecular and what is intermolecular hydrogen bonding. जैसे कि हम लोग कोई भी सैंपल का जब कैरी आउट करते हैं कुछ IR स्पेक्ट्रा, हम लोग को 3600 सेंटीमीटर इनवर्स में वेव नंबर में हम लोग को दिख जाता है वाटर का कुछ एक पीक है, विच मीन्स कि सैंपल में थोड़ा पानी है या फिर एटमॉस्फेयर से पानी निकाल के स्पेक्ट्रम में आ गया 3600, बट दैट इज द फ्री वाटर, ठीक है, दैट इज द फ्री वाटर. जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, हमको ब्रॉड पीक्स मिलते हैं, ठीक है, वी गेट वेरी ब्रॉड पीक्स.
एंड इफ यू आर हैविंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे नाइट्रोफेनॉल में हो गया, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन द पीक्स आर वेरी शार्प, ठीक है, पीक्स आर वेरी शार्प एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एविडेंसेस दिख जाता है 3200 टू 3400. सो अगर सैंपल में पानी है एंड इफ इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ योर सैंपल, then you will get the peaks between 3200 to 3400 centimeter inverse. And this strength of hydrogen bond will also be affected by a molecular geometry. Proton donor acceptor किस हाल में है, what is the relative acidity and basicity, and if there is a ring, then whether there is any strain in the ring or not. We have talked about Fermi resonance, ठीक है, Fermi resonance में vibrational levels अगर same हुए symmetrical compounds में, या फिर इफ यू इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऐसे इंटरेक्टिंग ग्रुप्स है जो फिर कपल कर सके, then you will have a Fermi resonance, then you can have a Fermi resonance. And as we have talked about this earlier, aldehydes में Fermi resonance होता है, giving rise to a doublet. Similarly lactone, lactams और lactams में Fermi resonance होता है. ना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा पढ़ा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट. ओके, नाउ दीज ऑल आल्सो अफेक्ट द वाइब्रेशनल मोड्स एंड इट कम्स डाउन टू बॉन्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में अगर हम लोग एल्किल ग्रुप्स इन ये कर रहे हैं, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग एल्किल ग्रुप्स, तो क्या होता है, ठीक है, हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट्स में देख रहे हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, सो व्हाट इज दैट इफेक्ट. फील्ड इफेक्ट में अगेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के इफेक्ट्स हो जाता है. सो देन वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस. ओके, नाउ सपोज हम लोग एल्डिहाइड एक है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए CH3. नाउ CH3 इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन डोनेट करने से यहाँ पे फिर कंजुगेशन ऐसे वो हो जाएगा, तो इसका जो CO बॉन्ड है दैट विल गेट वीकेंड, 1745 आ जाएगा. और एक जब CH3 कर रहे हो, अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पंप हो रहा है, ठीक है, अगेन फर्दर द बॉन्ड विल बी वीकेंड, तो बॉन्ड वेवलेंथ विल बी, वेव नंबर विल बी अगेन डिक्रीज्ड, वेव नंबर विल बी डिक्रीज, क्योंकि धीरे धीरे इसका फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द कंजुगेशन इफेक्ट. अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट्स अगर यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ उसका ज्यादा हो जाता है, CO बॉन्ड इफेक्टिव रहता है, इट डज नॉट participate in delocalization of electrons, nor the electrons are being pumped into the carbon. उसका जो जैसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो मेंटेन होकर रहता है. सो दैट इज व्हाई द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग एंड दैट इज व्हाई द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज गोइंग अप as soon as you introduce some इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट्स. ठीक है, अगर हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट्स की बात करें, जहां पे भी लोन पेयर होगा, क्या करेगा, जो बॉन्ड होगा उसका जो मेन बॉन्ड होगा उसके साथ जाके कंजुगेशन करेगा. एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इन द अर्लियर स्टडीज दैट कंजुगेशन कैन लोअर द अब्जॉर्प्शन, conjugation can lower the absorption. So mesomeric effects can also dominate the inductive effect. Okay, and हम लोग को देखना है कि क्या क्या species attached and what species are attached within the vicinity of the bond that we are studying. ठीक है, तो एल्डिहाइड एक जो CO बॉन्ड है, कीटोन का जो CO बॉन्ड है, उसके आसपास क्या ग्रुप है, क्या अनसैचुरेशन है, क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है, ठीक है, what are the field effects. So all of these things we have to see when we are deciding ki whether the vibrational frequency is going up or down. So now that we have discussed what are the factors, let us come to instrumentation. ठीक है, like हम लोगों ने पहले कल डिस्कस कर लिया था, कोई भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उठा के देख लो, उसमें एक सोर्स जरूर रहता है. ठीक है, वी यूजुअली हैव अ सोर्स, वी हैव अ सैंपल कंपार्टमेंट. ठीक है, आजकल डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स यूज होने लगे हैं, तो कल हमने जैसे डिस्कस किया था, सोर्स का जो बीम होता है वो रेफरेंस और सैंपल दोनों में जाता है. ठीक है, रेफरेंस और सैंपल दोनों में जाता है. एंड फाइनली जो डिटेक्टर होता है वो दोनों सिग्नल्स को they see both of the signals and then they give a difference that is amplified. We had discussed this last time. But what are the materials used in the instrumentation and how they're arranged, that differs from spectrophotometer to spectrophotometer. So this is essentially the same kind of thing. यहाँ पे
एक वायर सोर्स है, रेफरेंस सेल है, सैंपल सेल है, एक मोटर है जो इसमें एक मिरर लगा है. फाइनली इट गोज टू मोनोक्रोमेटर विच डिटेक्ट्स एंड गिव्स द transmitted light, and we are recording it in terms of wave number. So this is how an spectra looks like. Now we come to the different kinds of materials that are used for IR sources. So इस particular row में देखिए, nuanced glower, globar, incandescent, mercury arc, tungsten lamp, carbon dioxide laser. ठीक है. So these are the different sources, and यहाँ पे जो columns है, कैरेक्टर क्या है और सोर्स क्या है. तो सोर्स का कॉम्पोजिशन डिफर्स फ्रॉम सोर्स टू सोर्स. जैसे कि नॉन्स ग्लोअर के लिए होता है रेयर अर्थ ऑक्साइड्स, ग्लोबार के लिए होता है सिलिकॉन कार्बाइड, किसी इनकैंडेंसेंट लाइट के होता है नाइक्रोम वायर, मर्क्यूरी के लिए होता है हाई हाई प्रेशर में मर्क्यूरी, और टंगस्टन लैंप के लिए होता है टंगस्टन हैलोजन. एंड ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर इज ट्यूनेबल कार्बन डाइऑक्साइड लेजर. So operating temperatures for this is also different. Okay, operating temperatures for this is also different. Similarly, radiations produced is also different, and different kinds of sources are used for different kinds of IR region. So we have a near visible region, a middle region, a near region, and a far region. ठीक है. Intensity of radiation is also there. So नॉन्स ग्लोअर का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है. ठीक है, नॉन्स ग्लोअर का सबसे ज्यादा है. एंड Globar and Nernst glower are the most used sources for IR. Nernst glower and Globar are the most used. Globar particularly हम लोग के functional group के analysis के लिए it's very efficient. Globar source is very efficient. So this is again just giving an idea about how the black body radiation curves look like for different kinds of sources. Now, what kind of detectors are used? Again, different types of detectors are used for different applications. So the detector can be a thermocouple, it can be a thermistor, it can be a pyroelectric or a gole. Okay, it can be a gole. So thermocouple is mostly used जो हमारे ट्रेडिशनल इसमें है. सो इधर थर्मोकपल इज यूज्ड, एंड यूजुअली द मटेरियल्स जो यूज होते हैं वो बिस्मथ एंड एंटीमनी विच इज कोटेड बाय मेटल ऑक्साइड्स. ठीक है, दिस इज कोटेड बाय डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स. नाउ हमारे ट्रेडिशनल फोटोमीटर्स आजकल यूज नहीं होते, बट FTIR यूज होने लगा है. सो FTIR हैज मेनली some advantages over traditional IR spectrophotometers. एक तो है कि स्पीड और सेंसिटिविटी. ठीक है, वेरी इफेक्टिव इन स्पीड, जो कि बहुत ही स्लो हो जाता है ट्रेडिशनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स, क्योंकि एक फूरियर ट्रांसफॉर्म मेथड आ गया है. सो द स्पीड इज मच इंक्रीज्ड. ऑल्सो सेंसिटिविटी, जो भी नॉइज पहले आता था ट्रेडिशनल IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, दिस इज फिल्टर्ड आउट बिकॉज ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म मेथड. ऑल्सो ऑप्टिकल थ्रूपुट ज्यादा इंक्रीज्ड है. इट इज मोर प्रिसाइज, क्योंकि बार बार कैलिब्रेशन नहीं करना पड़ रहा है. ठीक है, बार बार कैलिब्रेशन नहीं करना पड़ रहा है. एंड ऑल्सो इट इज वेरी इजी टू यूज. FTIR इज वेरी इजी टू यूज. तो कोई भी एक बार देख ले, देन दे कैन फाइंड आउट द स्पेक्ट्रा वेरी इजिली ऑन देयर ओन. ऑल्सो ये FTIR क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं? क्योंकि एक एक बार बार स्कैनिंग नहीं हो रहा है. वेरी स्लो स्कैनिंग प्रोसेस पहले था. अभी all the scans are being simultaneously measured. ठीक है, पहले क्या था, इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का हम लोग IR स्पेक्ट्रा किए तो एक फ्रीक्वेंसी पहले मेजर होके स्टोर हुआ, फिर से दूसरे फंक्शनल ग्रुप का स्टोर हो रहा है. यहाँ पे क्या करें, जितने भी स्पेक्ट्रा, जितने भी फ्रीक्वेंसीज है मॉलिक्यूल्स के, वो एक साथ साइमल्टेनियसली दे आर बीइंग मेजर्ड. सो दैट इज व्हाई दिस इज better than the normal dispersive spectrophotometers used in IR. ठीक है, also they are using very simple optical device called as interferometer. ठीक है, so this is helpful because all the IR frequencies they already have encoding into it, and जब भी sample में वो पाया जाता है they are giving a signal. So this is all, this is like AI, उसको सब पता है. जब भी वो डिटेक्ट करता है कि ये दिस इज अ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, इट इज गिविंग अ सिग्नल. ठीक है, तो इसमें भी सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट्स है, बस यहाँ पे लेजर सोर्स थोड़ा डिफरेंट है. हीलियम नियॉन का लेजर यूज कर लेते हैं. ओके,
So different kinds of interferometers can be used, and the most popular is the Michelson interferometer. ये वाला आप डायग्राम्स आप देख लेना, Michelson interferometer, please note this down. You can look at the diagrams from your study material as well. So this is regarding the construction of the instruments. So this is not कुछ ज्यादा explain करने को है नहीं, just the working of how the beams are being split and how they are interfering with each other, and as a result the interferogram has been developed. ठीक है, it has developed the interferogram. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग FTIR जो बोर्ड है, क्या हो रहा है FTIR में? सो द रिकॉर्डेड सिग्नल्स दे आर बीइंग रिकॉर्डेड साइमल्टेनियसली, सारे फ्रीक्वेंसीज आ गए, बट व्हाट अबाउट दोस फ्रीक्वेंसीज? फ्रीक्वेंसीज का डेटा तो आ गया, बट हाउ आर यू गोइंग टू एनालाइज दैट, राइट? सो जो डिकोडिंग प्रोसेस था पहले वो बहुत ही टीडीएस था, ठीक है, टीडीएस था, बट यह भी एक मैथमेटिकल टेक्निक जो है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैथमेटिकल टेक्निक है. द डिकोडिंग इज easier and it is performed by the computer so that जो यूजर रीडेबल फॉर्मेट में होगा वो हमको दिख जाएगा. सो फ्रॉम रॉ डेटा दिस एफएफटी कैलकुलेशंस, अगर हम लोग सिर्फ इंटरफेरोग्राम के सिग्नल में जाते तो ऐसे कुछ दिखता, कुछ समझ में नहीं आता. बस इस इंटरफेरोग्राम के इंफॉर्मेशन को फूरियर ट्रांसफॉर्म करके जब ऐसे बन जाता है स्पेक्ट्रम, तो हमको पता चल जाता है वेव नंबर के हिसाब से हम लोग हाउ वी विल सी द स्पेक्ट्रा. Okay, how we will see the spectra. So it becomes user readable. So we have discussed the advantages of FTIR already: speed, sensitivity, mechanical simplicity, and calibration. Okay, calibration. Now let us discuss a little more about functional groups, different bonds, and which ranges they fall in. Okay, which ranges they fall in. सो 2000 टू 4000 के रेंज में हम लोग के जो OH बॉन्ड्स, NH बॉन्ड, वी हैव ऑलरेडी सेड कि OH बॉन्ड का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 3600 पे पाया जाता था फॉर फ्री OH, एंड फॉर हाइड्रोजन बॉन्डेड ये OH का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 3200 टू 3400. सिमिलरली एमाइंस के लिए भी NH का फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इज देयर. ऑल्सो वी हैव डिस्कस कि जब स्ट्रेंथ बढ़ जाता है तो उसका वेव नंबर इंक्रीज होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए उसका भी वेव नंबर हायर साइड पे है, ठीक है, इट इज ऑन द हायर साइड. सिमिलरली 650 टू 1550 वाला जो रेंज है, दिस इज मोस्टली सीन फॉर बेंडिंग वाइब्रेशंस. तो जितने भी वाइब्रेशंस यहाँ पे होंगे सब बेंडिंग वाइब्रेशंस होंगे रादर देन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस. ओके, so this is how they've just they have summarized this. Fingerprint region hota hai, so all the bending vibrations, like we said, bending vibrations are very unique and they're used to characterize a lot of functional groups. तो बहुत सारे compounds के ऐसे कुछ unique characteristic bending vibrations होता है which can be detected from the fingerprint region, that is 600 to 1500 centimeter inverse. Okay, and in the higher wave number sides हमको जो functional groups उसका एक idea मिल जाता है. So these are the various. ये कोई भी आपको स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी बुक में मिल जाएगा. इनफैक्ट एज आई टोल्ड यस्टरडे, हम आप लोग PS कालसी भी देख सकते हैं इसके लिए. सो ग्रुप फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं? व्हाट आर द रेंजेस? दे आर द एसेंशियली फ्रीक्वेंसी रेंजेस, एंड you have to also see what kind of intensity they are in. So alkanes ka, they are the frequency range. This is the frequency range. आपको देखना है कि एल्केन एल्किन जो भी है, जो भी आप लोग कंपाउंड देख रहे हैं, व्हाट आर द ग्रुप फ्रीक्वेंसीज? ग्रुप फ्रीक्वेंसीज में आपको बेंडिंग और स्ट्रेचिंग दोनों का देखना है. ओके, एंड उनका इंटेंसिटी भी देखना है. फॉर एग्जाम्पल एरोमेटिक रिंग्स, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड यू आर डीलिंग इन, यू विल सी दैट फर्स्ट देयर इज अ मीडियम काइंड ऑफ अ मीडियम ग्रुप फ्रीक्वेंसी होगा 3000 के रेंज में, और फिंगरप्रिंट रीजन में आपको आएगा 690 टू 900 के बीच में आपको स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगे. इफ यू आर गेटिंग समथिंग बिटवीन 690 टू 900 सेंटीमीटर इनवर्स, देन यू कैन से दैट इट इज अ एरोमेटिक CH बेंडिंग. ठीक है, एरोमेटिक रिंग है एंड उसका CH का बेंडिंग हो रहा है 690 टू 900 के बीच में. OH का we have already told you the regions, so you can confirm from here as well.
Now you see something interesting. हमने हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए बोला कि 3200 to 3400, यहाँ पे 3600 लिखा है, that's okay. यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए है 2500 to 2700 के बीच में. Now why does this happen? Also it is a broad stretching, ठीक है, broad band type का आएगा. So why does that happen? Hydrogen bonding carboxylic acids के केस में why the OH stretching is going down? We have already discussed the factors of vibrational frequencies. Why is it going down? Because of conjugation, right? Because of conjugation, resonance हो रहा है. So hydrogen bonding is already reducing the strength of the bond. उसके ऊपर अगर we have a carboxylic acid as well, the resonance is there. So resonance is there, the interactions are being coupled, so that is why the band is getting broader and the wave number is decreasing because the strength of the bonds is also decreasing. Okay, the OH का जो integral bond है, that is being disturbed by other bonds which are trying to capture the electron density of the OH bond. So that is why the bands are becoming broader. The interactions are becoming more coupled and more conjugated. So conjugation is decreasing the wave number. Similarly, amines ka we have already seen the region is 3300 to 3500. Okay. And alkenes का 1610 to 1680 होता है. Aromatic rings का भी CC stretching जो होता है 1500 to 1600. तो एक typical molecule में आपको क्या क्या, what is the skeleton of the molecule? Framework आपको देखना है, CC bonds है या CN bonds है. Functional group में you have to see whether it's a CH bond or a OH bond or an NH bond or a CO bond. CO bond किस किस species में आता है? अल्कोहल्स में आ जाएगा, एथर में आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा, एस्टर में आएगा. ओके, सो यू हैव टू टेक केयर कि CO सिंगल बॉन्ड किस में आता है, C डबल बॉन्ड O किस में आता है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फॉर different types of species because different functional groups will also be there. So here we are just going to go through different kinds of examples. Carbon carbon bond stretching. Stronger bond होगा तो higher frequency में आएगा. We have already talked about this. Conjugation lowers the frequency. Again, we have talked about this. Conjugated C double bond C, aromatic C double bond C. So this is decreasing. CH stretching. ज्यादा S character जिसमें होगा, they will absorb at a higher frequency. We have already seen how sp greater than sp2 greater than sp3. This is the typical alkane IR spectrum. ठीक है, this is the typical IR spectrum. So you can see the CH stretching here and the CH bending here. जो भी यहाँ पे जितना भी है, this is the fingerprint region. The fingerprint region. So all these examples will be given to you. So एक एक example आपको just देखना है कि कहाँ पे branching की वजह से क्या क्या differences आ रहा है. अभी एल्किन को छोड़ के लेट अस गो टू, सॉरी, एल्किन को छोड़ के एल्किन पे जाते हैं. एल्किन में भी आपको वो CH बेंडिंग मिल जाएगा. तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C स्ट्रेच एक मिलता है एक्स्ट्रा. ओके, C डबल बॉन्ड C स्ट्रेच एक एक्स्ट्रा आता है and a CH stretch also, this is there, and you will notice that in case of alkyne this is higher, this value will be higher in case of alkyne. Okay, for alkene it is a little more. Now unconjugated में different है and conjugated में different है. We have already known that conjugation decreases the wave numbers. Okay, conjugation will decrease the wave numbers. Now what about cyclic alkene? तो cyclic alkene में हम लोग का जो ring strain होता है that matters a lot. Okay, that matters a lot. तो ring strain, the CC stretch will be sensitive to ring strain. The CC stretch will be sensitive to ring strain. आपको यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल मिल जाता है and you are asked to order, इसको order में करो. Okay, they can ask that you can do this in order or not. Then if you know how ring strain affects the cyclic alkene, then you can order them easily in favor of increasing or decreasing wave numbers, and you can also give the reason why. ठीक है, जो ग्रुप्स होंगे अटैच्ड टू द एल्किन ग्रुप्स वो अच्छे से देखना है. यहाँ पे कंजुगेशन भी है और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी है. एज कंपेयर टू अ नॉर्मल कंजुगेशन, हाउ इट इज डिफरेंट. ठीक है,
how it is different, that you can easily see. This is for an alkyne. एल्काइन का भी सीसी स्ट्रेच विल बी हायर देन दैट ऑफ सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेच. यहाँ पे आपको वेव नंबर के हिसाब से भी पता चल गया. एंड सी ट्रिपल सी एच जो स्ट्रेच है, दिस इज ऑल्सो बी ग्रेटर देन एल्केन एंड एल्कीन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड. Now OH and NH stretching are very important because बहुत सारे functional groups में this is coming up. OH is coming up in your alcohols, it is there in carboxylic acids, NH is there in amides, it is there in amines. Okay, it is also coming up in aromatic amines, right? Aniline में भी है. So how do these look different in different kinds of solvents? जैसे अल्कोहल OH हमेशा थोड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है. इट इज वेरी ब्रॉड अनलेस इट इज फॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. It is usually broad with a rounded tip. Now secondary amine, it is also broad but it has a sharp spike. It has a sharp spike. और प्राइमरी अमीन में दो शार्प स्पाइक्स होंगे. क्यों? क्योंकि दो NH है, ठीक है. एंड टर्शरी अमीन में क्या है? उसमें कोई NH है ही नहीं, so there will be no signal. So that is how you will distinguish. If you are asked to distinguish, how will you distinguish between primary amine, secondary amine and tertiary amine? Then you will say that primary amine is broad, it has two sharp spikes because there are two NH groups, two NH stretching. Secondary amine is broad but with one sharp spike because it has one NH stretching. And for tertiary amine, there will be no signal. Okay, there will be no signal. And unka range is very pass. OH and NH ka ranges, they are very nearby to each other. So this is again OH ka hi stretching they are again showing. Now the carboxylic acid ka jo OH hai, that is very different from that of alcohol or phenol. That is what they are saying here, because it is much broader. Broad क्यों है? Because of extensive resonance. It is extensive resonance. तो यहाँ पे थोड़ा broad peaks आ जाता है. Okay, यहाँ पे थोड़ा broad peaks आ जाता है. यहाँ पे NH we have already said forked peak. Forked peak is तुम्हारा spike कैसे आ रहा है, ठीक है. This is forked means spiking. Okay, spiking. So we've already discussed primary, secondary, tertiary amines. यहाँ पे this is how it looks like. If you have a primary amine with two NH stretch, यहाँ पे दो peaks आ जाएंगे. This is a sharp spike जो आता है, दो पास में दो bands आ जाएंगे. And this is an aromatic primary amine. This is an aromatic primary amine. सेकेंडरी अमीन में एक ही पीक आएगा, ठीक है. इन दिस रीजन NH के लिए एक ही पीक आएगा, वन सिंगल पीक. टर्शरी में रेंज में 3300 वाले रेंज में देयर विल बी नो NH stretch, so this portion will be absent. Now alkyne के लिए again they are saying CH stretch occurs in 3300, ठीक है. CC stretch occurs here, ठीक है. C triple bond C. CH में again how it is in alkene, how it is differing. एक CC stretch आएगा which is much less than that of alkyne, ठीक है. And how we are looking at aromatic stuff. अगर हमारे पास एक toluene है, ठीक है. If we are having toluene, then यहाँ पे रिमेंबर करना 1600 और 1475 में कैरेक्टरिस्टिक पीक्स आते हैं. ओके, कैरेक्टरिस्टिक पीक्स आते हैं. दिस इज फॉर सीसी स्ट्रेचिंग. रिंग स्ट्रेचिंग जो आता है वो इमीडिएटली फिंगरप्रिंट रीजन में आपको देखना है 1600 और 1400 के रेंज में कुछ आ रहा है कि नहीं. सिमिलरली सीएच स्ट्रेचिंग भी यू विल हैव टू टेक केयर. So aromatic CC stretches here 1600 to 1585. Also bending. CH का इन प्लेन बेंडिंग. CH स्ट्रेचिंग तो अबव 3000 के रेंज में आता है, बट एक इन प्लेन बेंडिंग आता है 1300 to 1000 एंड आउट ऑफ प्लेन आता है 600 ऑनवर्ड्स. सो दिस पर्टिकुलर रीजन विल बी फिल्ड विथ एक्सटेंसिव बैंड्स इफ यू हैव एन एरोमेटिक रिंग, क्योंकि उसमें बेंडिंग मोशन भी है, सीसी स्ट्रेचिंग भी है, इन प्लेन आउट प्लेन दोनों के बेंडिंग्स हैं.
ठीक है, so you will have to take special care. Now what about aldehydic hydrogen? We have talked about Fermi resonance. ठीक है, Fermi resonance. तो Fermi resonance में ऐसे आता है, CH aldehyde will have always two peaks. एक के बाद एक आएगा, 27, 25, 28, 27. So 2700 में एक पीक आएगा, 2800 के रेंज में एक पीक आएगा. और अगर दोनों ऐसे दो पीक्स डबलेट होके आ रहे हैं, it means it is an aldehyde because we have a Fermi resonance going on for aldehydes. ठीक है, similarly they're asking to distinguish between a nitrile group and a alkyne group. Okay, nitrile and an alkyne group, so they are very nearby. They both have sharp medium peaks. एक 2150 के रेंज में, 2250 के रेंज में. So alkyne and nitrile will have to be very careful when you are distinguishing. We will have to look into other functional groups as well. तो उसमें एक साथ पता नहीं चलता. C triple bond C का stretch और C triple bond N का stretch के साथ you will have to look into the other functional groups to properly characterize the molecule. Now we come to carbonyls. Carbonyl का कीटोन एल्डिहाइड जितना भी होगा, CO stretching का region will remain the same. Okay, between 1500 to 1800 के range में it will come. So how many compounds of carbonyl stretch? Ketone होएगा, aldehyde, acids, esters, lactones, acid halides, anhydrides, amides, lactams, everything will show a CO stretching bond. बस ऊपर नीचे जाएगा depending on what type of conjugation is there. Alpha beta है क्या नहीं. Neighboring groups, what is the role of the neighboring groups? Either there is a hydrogen bonding affecting this or not. Electronic effects कुछ है कि नहीं. Whether those CO stretching is part of a ring or not. So in this range it will be found, but it will have different positions. So aliphatic में 17-15 होता है ketones का. We have already seen in isolated ketones. We have mentioned this before. In isolated ketones, you have a 17-15 centimeter inverse is the normal position. Now, what are the types of competing effects? We have seen कि अगर fluoride, chloride, bromide जो भी हम लोग दे रहे हैं, these will have an effect. Okay, depending on the dipole moment. What is increasing the double bond character or increasing the double bond character of the CO group? Okay, what it is increasing or decreasing the CO group. So here we can see the effect of OH, of OR, of added halogens. So what is happening in adding halogens? जब halogens add कर रहे हो, from isolated ketone 17-15 का है, the wave number is increasingly affected. तो ये increase हो रहा है because these are all electronegative groups. These are all electronegative groups. And if you have a resonating structure in form of lone pairs, यहाँ पे सल्फर का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इस बॉन्ड को दे देगा, CN बॉन्ड को दे देगा या फिर CS बॉन्ड को दे देगा, तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथन हो जाएगा. CO बॉन्ड विल ब्रेक, है ना. CO बॉन्ड विल ब्रेक. बॉन्ड का स्ट्रेचिंग is dependent on the bond strength. If CO bond is weakened, then the wave number will also be weakened. So that is why amide में particularly the CO bond is weakened and has decreased wave number. Okay, it has decreased wave number in comparison to a normal ketone CO. ठीक है, normal ketone के CO से amide का कम हो जाता है. Similarly, we have talked about alpha beta unsaturated carbonyl. Now this alpha beta unsaturated carbonyl can also come in form of an aromatic ring. तो हमारा एक ketone हो सकता है which has on one end an aliphatic group like a methyl group. On the other hand, it has a aromatic ring. And if it has an aromatic ring, it automatically means that this is an alpha beta unsaturated carbonyl, right? It automatically means that this is an alpha beta unsaturated carbonyl. So यहाँ पे you have a overtone. Okay, we'll talk about overtones later. So एक peak आ जाता है 3350 में, which means that this is an overtone. Okay, two kinds of absorption will be observed depending on what is happening out, depending on how the geometry is arranged. अगर trans में है, then it is 1685. As soon as it becomes cis, then it becomes more. Okay, so depending on the geometry also, the absorptions will be a little shifted.
सो दिस इज द एंटायर स्केल जो उन लोगों ने दे दिया है कि इस पर्टिकुलर रीजन में क्या क्या हो सकता है. ठीक है, अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड. सो दिस इज द पर्टिकुलर बैंड. सी डबल बॉन्ड ओ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. सो दे हैव ऑल डिटेल्ड दिस आउट. Similarly, we have talked about ring strain. CC bond में हमने ring strain की बात की थी. Now again CC bond in conjunction with a ketonic part. Okay, ketonic oxygen CO bond के साथ we are again discussing the strain rings. So if you have a strain ring, if you are interacting with the adjacent CC bond, तो फिर the CO bond stretching will be increased. So जितना strain ring उतना ही आपका CO bond का stretching will increase. Okay, because the bond angle is also influencing the absorption frequency of the CO bond. Aldehydes में again they are discussing the role of electron withdrawing groups and conjugative groups. We have already discussed this one. कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, फ्री OH का 3500 to 3600 होता है. नहीं तो एसिड्स दे आर एग्जिस्टिंग एज डाइमर्स. ठीक है, डाइमर्स की वजह से, एसोसिएशन की वजह से ब्रॉड स्ट्रेचिंग हो जाता है. सो यू विल हैव इंटेंस बैंड्स बट ब्रॉड बैंड्स. ओके, यू विल हैव ब्रॉड बैंड्स. एंड अमाइड में ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि अमाइड कार्बोनिल NH में NH2 है अमाइड्स में, तो एक दो NH का स्ट्रेचिंग यहाँ पे आ जाएगा. एंड C डबल बॉन्ड O का स्ट्रेचिंग क्योंकि डिक्रीज कर गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 1681 में C डबल बॉन्ड O का स्ट्रेचिंग आएगा. सो यू विल इन इफ यू आर लुकिंग फॉर पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम एंड आपको NH रीजन में दो बैंड्स आ गए एंड C डबल बॉन्ड हो गया, देन यू कैन इमीडिएटली से दैट दिस इज एन amide. Okay, you can immediately say that this is an amide. Carboxylic acid, we were talking about broad band, so this is how the broad band looks like. OH का एक ऐसे broad आ जाएगा. This part is not sharp at all. Similarly, CO का stretching जो होगा carboxylic acid का, वो भी थोड़ा कम region में आएगा, 1710 में आएगा. Here they are talking about aldehydes and too weak absorption near 2850 and 2750. So these are results of Fermi resonance. These two bands are also known as Fermi doublets. They are also known as Fermi doublets. This is how the Fermi doublets are looking like. ये भी हम लोगों ने पहले देख लिया है. Now ester is very interesting. Esters are very interesting क्योंकि CO का एक स्ट्रेच भी यहाँ पे आ रहा है. ओके, CO का स्ट्रेच भी आ रहा है एंड C डबल बॉन्ड O का स्ट्रेच भी आ रहा है. ओके, यू आल्सो हैव अ CO स्ट्रेचिंग नॉर्मल जो 1800 to 1500 का हमने देखा है. मेनी कंपाउंड्स आर कमिंग फॉर द CO स्ट्रेच. सो C डबल बॉन्ड O का स्ट्रेच भी है और सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेच भी है. सो यू विल हैव two kinds of CO stretches. One single bond that is occurring in 1250 and another one at 1752. Okay, so esters में दोनों bonds का देखना है, एक सिंगल बॉन्ड का CO और एक डबल बॉन्ड का CO. Similarly, in case of anhydrides, हम लोग एस्टर में क्या देखे, एक सिंगल बॉन्ड का CO है. एनहाइड्राइड में there will be 2 C double bond O's absorption in the same regions. रीजन क्या है, 1800 to 1650 सेंटीमीटर इनवर्स. इसमें ही इतने सारे कंपाउंड्स का हम लोग देख सकते हैं. बट इफ यू हैव टू बैंड्स which reflect 2 CO absorption, you can say that this is an anhydride. So let us look at the example. यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे इस फिगर में जैसे एक फर्मी डबलेट हो. ठीक है, तो आपको पहले कंफ्यूजन हो सकता है that whether this is an aldehydic stretch or not, but then look at the frequencies. If both are falling under the same region, that is the 1800 to 1650 centimeter inverse, then you can conclude that this is because of C double bond O. Whereas the aldehyde में हम लोगों ने बात की थी, that was for CH. Okay, that was for CH aldehydic region and वो 2750 and 2850 centimeter inverse. So that is not to be confused with the doublet that we are seeing here. So these two regions are because of the two CO bonds here. Okay, C double bond O
and C double bond O. Okay. So this is again, they are talking about simple ketones. We have already covered this. एल्डिहाइड का कंप्लीट एक दिखा दिया उन लोगों ने. So this is from experimental data. So in your exams itna the entire spectrum won't come, lekin what for an IR spectra, what they can do is they will give you the range. ठीक है, they can say that stretching frequency was observed at this particular centimeter inverse, another frequency was observed in the fingerprint region at this particular centimeter inverse, and functional groups may be there at this particular centimeter inverse. आप लोग को देखना है कि फंक्शनल ग्रुप्स का रीजन क्या है. अगर फिंगरप्रिंट रीजन में वही 600 to 900 के रेंज में वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ पीक्स, इट मींस देयर इज एन एरोमेटिक रिंग. ओके, सपोज सी डबल बॉन्ड ओ के रीजन में यू हैव अ पीक बिटवीन 1800 to 1650, देन इमीडिएटली आपको इंट्यूशन आना चाहिए दैट इट इज अ C double bond O. But what kind of C double bond O? Okay, then you have to think whether it is an aldehyde or a ketone or an anhydride or an ester. Then you'll have to look for indications. Aldehyde है तो एक डबलेट होगा 2750 2850 पे. CH stretching का है कि नहीं, you confirm that. ठीक है. Then if it is a ketone, then 1715 पे आना चाहिए, but इसके आसपास कुछ है कि नहीं. ओके, अगर सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ दोनों प्रेजेंट है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड, देन एस्टर है. अगर सी डबल बॉन्ड ओ दोनों आ रहा है डबलेट की तरफ, देन दैट इज एन एनहाइड्राइड. सो यू मस्ट लर्न कि हर एक रीजन में मुझे जाके देखना है कि ये क्या हो सकता है, एंड देन यू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटीज, and then you can arrive at the proper functional groups. Once you have an idea of the functional groups, आप लोग easily molecule को construct कर पाओगे. Here they have also given the carboxylic acid का कैसे दिखता है. OH stretch, see how broad it is. हम लोग का normal CO stretch कितना sharp है, and for an OH stretch of a carboxylic acid it is so broad. Why is it broad? Because of the association. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरमोलिकुलर जब भी एसोसिएशन होता है, यू विल गेट ब्रॉड पीक्स. अगर इंट्रामोलिकुलर होता तो शार्प होता. ओके, तो शार्प होता. ऑल्सो देर इज अनदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस. इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर को डिफरेंशिएट करने में IR इज वेरी हेल्पफुल, बट देर इज अनदर डिफरेंस इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर में. इट इज सॉल्वेंट डिपेंडेंट और सॉल्वेंट इंडिपेंडेंट. ओके, so intermolecular will be more solvent dependent, क्योंकि because if you're dissolving a molecule in a solvent, तो फिर solvent effects क्या करेंगे, they can decrease the association or the dissociation of the molecules. उनके functional group के साथ शायद solvent भी interact कर ले. So if it is interacting with the solvent, okay, if it is interacting with the solvent, then the bonds will get disrupted, the hydrogen bonding will be getting disrupted. But if something is intrinsically intramolecularly hydrogen bonded, they will not be as perturbed by the solvent effects as that of the intermolecular. So not only the peaks will be sharp, ठीक है, but the hydrogen bonding will also not be much affected as compared to these kind of broad OH stretches that is occurring in intermolecular hydrogen bonding. So this is just a recap. Conjugation के साथ क्या क्या हो रहा है, we have already discussed this. Okay, carbon nitrogen stretching usually in nitrogenous compounds. आपका we have already discussed about amides, NH stretching. We have discussed about amines. In all these compounds, amides, amines, nitriles, ठीक है, आपका एक CN stretching भी होगा. So you have to look out for that particular thing also. This happens in the fingerprint region. So CC-CN bond, this also occurs at 1200 centimeter inverse. If this is a double C double bond N, then occurs more strongly, and C triple bond N is almost equivalent to alkyne C triple bond C. So we had discussed this already कि 2200 above अगर है तो C triple bond N है, and अगर C triple bond C है तो थोड़ा 2200 के नीचे होगा. So this is how the nitrile IR spectrum looks like. You can see here the C triple bond N stretching here. So this is again a summary of the IR absorptions that we have till now. ठीक है, फिंगरप्रिंट रीजन यू नो, यहाँ पे डबल बॉन्ड का है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का है, और यहाँ पे ट्रिपिकल फंक्शनल ग्रुप्स का जो NH, OH and CH stretching occurs in the higher wave number region.
Okay, so this is all about IR. Okay, अगर आपको अभी कोई भी क्वेश्चन है just quickly ask. We'll take a short 5 minute break and we'll just start NMR before we end the class. Okay, so just take a 5 minute break, think about the presentation. अगर कोई भी doubts है you can just type in the chat box. Okay. Okay, Yash, you have said that some students are facing problem in joining process. I have no control over the joining process. I myself have joined through an invite link by IGNU. तो जो भी ज्वाइनिंग लिंक है, you just click on that. In fact, I was facing some problems yesterday itself in joining, so I contacted the authorities. तो आप लोग भी अगर कोई भी ज्वाइनिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम है, the invite link is not created by me, it is created by IGNU. तो आप लोग उनको directly you can contact. And if you have a good network connection, my network was dropping yesterday, so that is why I could not connect. But if you're having some network issue, तो correct that first, and then again if you cannot join, तो फिर आप फिर से ऑथोरिटीज को कनेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो एंश्योर कि आप जिस ईमेल आईडी पे आपको भेजा गया है इनवाइट लिंक, आप उसी ईमेल आईडी से ज्वाइन करें, नहीं तो इट विल नॉट वर्क. ओके, इट विल नॉट वर्क. सो सम स्टूडेंट्स जो आप बोल रहे हैं, यू कैन आस्क दो स्टूडेंट्स टू just check whether they are using the correct email ID or not. Okay. So we will just start of NMR. Start करेंगे and then we will continue in the next class. Let us take a 5 minute break. आप लोग recharge हो जाओ. If you want to go for some washroom or water break, please go and come back in 5 to 10 minutes. We'll start the NMR portion now.
Okay, I think we can start the NMR thing now. Okay, so what is your idea of NMR? Till now we have been discussing about IR spectroscopy. हमने UV visible spectroscopy में देखा about electronic energy levels. यहाँ पे for IR spectroscopy we dealt with the vibration of bonds. So we've been talking about electrons, we have been talking about bonds. Now we are going to talk about nuclei. Okay, we are going to talk about nuclei because NMR spectroscopy means nuclear magnetic resonance. Okay, nuclear magnetic resonance. And here it is based on the fact that some atomic nuclei, they behave like a small magnet. Okay, they behave like a small magnet which is rotating around its own axis. They are behaving like a small magnet which is rotating around its own axis. And उस rotation की वजह से क्या field generate हो रहा है and what is happening with the nuclei, what is happening with the field that is associated with a spinning nuclei or a spinning proton. Okay, because all nuclei they carry some charge. जब spin कर रहा है nuclear axis में, then it is generating some kind of magnetic dipole. Okay, if it has a magnetic dipole, again it will also have some kind of angular momentum. Now angular momentum की वजह से क्या हो रहा है, what is the nuclear magnetic moment, what is the spin number, everything determines the basic structure of a nuclear magnetic resonance. Okay, so just share my window. So can you see my window? Okay, I think you have you can Yes, see ma'am. this one. Okay, so here NMR spectroscopy is determined is associated with nuclear spin. So it has a magnetic energy absorption process and it orients the spinning nuclei, whatever we have discussed. Like if there is no field, then they are spinning randomly and they're all oriented randomly. But when placed in a strong external magnetic field, these individual nuclei, which are all spinning and which are all oriented randomly, they are being oriented along the field. They have a particular orientation when they are placed in a particular external magnetic field. And how many kinds of nuclear magnetic spectra can be known? Most popular जो है होता है proton NMR spectroscopy, whatever, because protons are abundantly available in any kind of sample. ठीक है, any kind of sample में protons are the most useful source of information that we can develop. Apart from that, C13 NMR use होने लगा है, which is based on the skeleton of the molecule. ठीक है, also for various other kinds of different kinds of applications, P31, F19, N14. Are you noticing something common with all these species? Because they have odd mass numbers. They have odd mass numbers, right? So nuclear spin क्या होता है? They behave similar to electrons. Protons charged particles से spin करेगा, then they will have a magnetic field, which is similar to that of the electromagnetic radiation. Excuse me. Now we have already talked about what happens when there is no applied magnetic field. In influence of applied magnetic field क्या होता है? These particular nuclei, they can be oriented along the magnetic field. This forms the alpha state. ठीक है, this forms the alpha state. अगर इनका spin वाला direction is along the magnetic field, वो ground state में है. पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर कंडीशंस में ये फ्लिप हो जाता है. ठीक है, फ्लिप होके क्या होता है, द स्पिन्स आर ओरिएंटेड against the magnetic field, and that is known as your beta state, and this beta state is at a higher energy level. ठीक है, हायर एनर्जी लेवल. ग्राउंड स्टेट नहीं है, एक्साइटेड स्टेट है. एक्साइटेड स्टेट में फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम द स्पिन्स आर ओरिएंटेड अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड. एंड उस चीज की वजह से जब स्पिन्स ऐसे स्प्लिटिंग जो होता है, टू स्टेट फॉर्मेशन हो जाता है अल्फा और बीटा, द एनर्जी will be delta E. There is an energy difference between these kind of spins. Some aligned along the magnetic and some aligned differently. That is in beta field. Okay. Just one second.
So here, the basic fundamental of NMR spectroscopy is how are you using the radiation to flip the spin state of the lower energy nuclei to higher energy state. And you are doing that by utilizing the energy difference, delta E. वो डेल्टा ई का फ्रीक्वेंसी जो है एच न्यू का फ्रीक्वेंसी, अगर हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं रेडियो वेव्स के साथ उसके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहा है, then only the spin state will flip, and whenever it is flipping you will get a signal. Okay, so magnetic resonance occurs when the nucleus is placed in an external field of equal strength to the specific identity of the nucleus and subjected to the precise radio frequency. What do you mean by the precise radio frequency? The frequency at which the energy of the difference between the spin states will be equal to the frequency of the radiation, and the energy difference will be matching. When the energy difference will be matching. Also, you have to see how the directionality of the spin is being manipulated, because when this frequency हम लोग जो कर रहे हैं, this is varying from element to element. हम लोगों ने कितने सारे NMR के स्पेक्ट्रोस्कोपीज देखे, F19 H प्रोटॉन का देखा है, C13 का देखा है, ठीक है, P31 का देखा है. This will differ from isotope to isotope. Also, applied external field का जो power है, that will also be dictated by the internal magnetic field. Okay, this will be dictated by the internal magnetic field. So we know that initially कोई difference तो होता है नहीं when you have कोई external magnetic field नहीं होता है, but because of the presence of the external field there is a divergence between the higher and lower energetic spin states. तो जैसे ही intensity बढ़ती जाती है of the external field, the separation is also increasing between the spin states. Okay, this is increasing between the spin states. So accordingly we can tune the energy depending on the power of the external field. We can tune the splitting, or we can tune the magnitude of the splitting depending on the magnitude of the external magnetic field. So how does it work? What is the essential composition of a spectrophotometer? You can generate any kind of field strength by the magnet. So एक magnet का जो strength है, you take a powerful magnet and you can generate a particular external magnetic field, and you have to place the sample in the spectrophotometer, and then it will be bombarded with the radio frequency waves. Okay, if you are bombarding it with radio frequency waves, what happens here? Correct intensity is there and the current matching of the frequency is there, then the nuclei of the sample, they will absorb the radio frequencies or the radio waves. What is the radiation you are giving there, they will absorb it. Whenever they will absorb it, what will happen? That they will start orienting. Unka spin states, they will start orienting because they will have come into resonance. Okay, they will come into resonance, and this resonance, whenever there is a flipping, this will एक current pass होगा, that it will absorb a particular amount of current and that will be noted by the detector. In this case, there is a receiver coil. वो sample के around that will be wrapped up. Okay, sample tube के around that will be wrapped up. So wherever there is a resonance, there will be a small amount of current which can be detected by a receiver coil. Now the small amount of current, वो कितना amount हुआ, that will be translated into a signal. Okay, that will be translated into a signal because there's a detector and a output. There will be a translation of an output which will be there in form of a spectrum. Finally, we will get a signal in the spectrum. तो different बहुत सारे ऐसे nuclei होंगे, बहुत सारे ऐसे protons. Suppose we are talking about a proton spectrum, बहुत सारे protons as a different signals देंगे, and we will get many different signals in the spectrum for our analysis. Now this is a typical representation of how an NMR spectra works. ठीक है. So each signal, it contains some kind of information. Whether उसका position जैसा है, उसका height कैसा है, उसका width कैसा है, उसका multiplicity कैसा है, that depends on a lot of factors, which is that of the chemical structure of the compound. हम लोग NMR spectra क्यों कर रहे हैं? Because we want the molecular structure. So how far the signals are shifted, they provide information about the chemical environments. Okay, and how many signals are there and how they are splitted,
दैट गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट कितने हाइड्रोजन्स हैं और वो किन किन एनवायरमेंट्स में है. ठीक है, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर इन्फ्लुएंसिंग द पर्टिकुलर हाइड्रोजन विच इज गिविंग द सिग्नल. Okay, that will give you the multiplicity. Okay, so you can know the number of neighboring hydrogens and where they are present depending on how the signal is splitted and where the signal is occurring. Okay, so let us know a little more about chemical shifting. ठीक है, now एक popular question जो आता है, हम let us go back to the spectra. तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जीरो पे एक छोटा सा सिग्नल है. ठीक है, जीरो पे जो सिग्नल है दैट इज बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट. हम लोग एक बेस सिग्नल एक देते हैं विच इज एंड वी आर गिविंग द कंपाउंड सिलेन. ठीक है, टेट्रामिथाइल सिलेन. प्लीज नोट दिस डाउन, टेट्रामिथाइल सिलेन. Why is it used in NMR spectra? ठीक है, why is it used in NMR spectra? जितने भी हमारे compounds है, the tetramethylsilane is common in them because we are giving that as a reference compound. Reference compound which gives zero signal. उसके रिलेटिव में हम लोग जितने भी कंपाउंड्स का केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट करते हैं. केमिकल शिफ्ट इज एवरीथिंग रिलेटिव टू दैट ऑफ द टेट्रामिथाइलसिलेन सिग्नल. Now you can write this down for your homework assignment. Why is tetramethylsilane used in NMR spectra? Why is tetramethylsilane used in NMR spectra? This is a previous year question. आप लोग इसको देख सकते हैं. ठीक है, टेट्रामिथाइलसिलेन के बारे में प्लीज अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स. Why is it used? ठीक है, so you can also write about what alternate compounds are being used now, but why tetramethylsilane is most popular in NMR spectra. Why is it used as reference compound in NMR spectra? This is a previous year question. Now we are going to talk a little bit about chemical shift. So we have talked about tetramethylsilane वो reference 0 पे दे देता है. जितने भी बाकी functional groups है वो सब upfield या downfield होते हैं. अपफील्ड क्या होता है? शील्डेड. डाउनफील्ड क्या होता है? डाउनफील्ड क्या होता है? दे आर नॉट शील्डेड और डी शील्डेड. सो शील्डिंग क्या होता है? कोई भी न्यूक्लियर इट इज एक्सपीरियंसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इट इज एक्सपीरियंसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड. तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड होता है देन इट इज गिविंग अ सिग्नल. ओके, इट इज गिविंग अ सिग्नल. If it is being shielded by some additional protons, if there are too many protons in the environment, then it will occur upfield. ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी में लोअर इसमें एब्जॉर्ब होगा, सो इट विल बी अपफील्ड. जब डाउनफील्ड होता है, जब इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीजिंग देन इट इज गोइंग डी शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है. सो दिस इज ऑल अ इंटरप्ले ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इट इज एन इंटरप्ले ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, functional groups, hybridization, and chemical environments. So different compounds, different functional groups have different chemical shift. So you can write down the definition. Chemical shift is a position of signals in NMR spectra because of various chemical influences within the molecule. So it is a position of signals in NMR spectra due to various chemical influences within the molecule. And how is the magnitude determined? It is determined by the chemical environment. What is the chemical environment? It is essentially the molecular arrangement existing around the given proton. Okay, and कैसे arrangement हो रहा है उसके हिसाब से chemical environments भी differ करते हैं. So chemical shifts depends on various factors. जैसे हम लोगों ने IR spectrum में देखा था, यहाँ पर भी we are noting that these are the same kinds of fields. जैसे कि inductive effect will definitely influence electronegativity, hybridization, hydrogen bonding. ठीक है, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे फैक्टर आता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसके स्ट्रेंथ के साथ भी इफेक्ट हो जाता है. बट केमिकल एनवायरनमेंट के साथ अगर केमिकल शिफ्टिंग की हम लोग बात करें तो फिर वी विल नोटिस द सेम काइंड ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द आईआर एब्जॉर्प्शन. यहाँ पे भी एनएमआर में हम लोग को सेम फैक्टर्स मिल रहे हैं. हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. So if you are given a question, write the different factors influencing chemical shift. You have to write down all of these with examples. Okay, you have to write all of this with examples. So what is an induced magnetic field? So if a nuclei are excited by an external applied field, जो electrons surrounding the nuclei, they will also have individual magnetic fields.
and this can oppose the applied field. ठीक है, न्यूक्लियाई अपने अप्लाई जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया गया उसके साथ न्यूक्लियाई एक्साइट हो गया, बट सिर्फ न्यूक्लियाई एक्साइट हो रहा है. व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली, उनके रिवॉल्विंग से भी इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स दे आर being produced and they will oppose the applied field. Okay, they will oppose the applied field and this is also known as induced magnetic field. तो अगर हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं and they are giving an induced magnetic field which is opposing that thing which is felt on a proton, तो फिर वो एंटी पैरेलल हो गया and this is known as the shielding effect. Got it? This is known as the shielding effect क्योंकि the proton was feeling something at a particular magnetic field, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको अपोज कर दिए. ठीक है, उसको वो अपोज कर दिए. सो नाउ इट इज नॉट फीलिंग द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज फीलिंग अ diminished influence. So that is why the electron fields are shielding the proton from feeling the actual magnetic field. Am I clear? So this interaction is known as the shielding effect. ठीक है, अब de-shielding क्या है? If we are having an electron, circulating electron which has a magnetic field which is aligned with the external field, then it will enhance the external field's effect on the proton. अगर हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स है, अगर हमारे पास ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अलाइन कर रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड के साथ, दे विल नॉट अपोज द एक्सटर्नल फील्ड, दे विल इनफैक्ट superimpose or they will enhance the external field, and this is known as de-shielding. Okay, this is known as de-shielding. Now shielding, de-shielding is dependent on the chemical environment. It is also dependent on the geometry. It is also dependent on the geometry. और कौन से एक्सिस में हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, कौन से एक्सिस में हम लोग देख रहे हैं. Now this is how de-shielding and shielding. ठीक है, अगर कोई भी अनअफेक्टेड फील्ड हो जैसे टेट्रामिथाइल सीरेन, वो जीरो पे आ जाएगा. जो भी शील्डेड प्रोटॉन्स होंगे वो थोड़े कम रेंज में आएंगे, जैसे कि 1.5 टू 3.5 के रेंज में आपको शील्डेड प्रोटॉन्स मिल जाएंगे, which means the electron density is very high here and it is opposing the external magnetic field. Any de-shielded proton will come over here. Above 5 के रेंज में the de-shielded protons here. Anything that is shielded is known as upfield. Anything that is de-shielded occurs downfield. Okay, occurs downfield. So this is an essential thing. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है, बिकॉज प्रोटॉन और अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के बीच में ये कबाब में हड्डी है. सो इट विल बिहेव लाइक अ बैरियर बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ प्रोटॉन्स एंड अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड. जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड चाहिए होगा टू ब्रिंग इट टू रेजोनेंस. ओके, सो इफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर थोड़ा कम हो गया तो फिर डाउनफील्ड इमीडिएटली चला जाएगा. इफ यू हैव अ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोटॉन अपफील्ड आएगा, इट विल बी शील्डेड. अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है तो प्रोटॉन डाउनफील्ड आएंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रम में दे विल बी डी शील्डेड. ओके, सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या आता है? सो जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एक प्रोटॉन के क्लोजर होंगे, दे विल हैव अ डाउनफील्ड शिफ्ट. Okay, very simple logic. Always think about the electron density. Okay, always think about an electron density. Now this OH group and this carbonyl group is attached to, suppose, this CH group. ठीक है, this CH group, because of its vicinity to the O and O here, इसका जो H होगा, this will be more de-shielded. But consider carbon 4. कार्बन 4 में ये मिथाइल ग्रुप है. ठीक है, इसके चारों ओर क्या है? एक मेथिलीन है, दूसरा मेथिलीन है. ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन उसको इफेक्ट ज्यादा नहीं कर रहा है, तो इसका ज्यादा डीशील्डिंग नहीं होगा, तो इसके CH ग्रुप्स सारे अपफील्ड आएंगे. बट इसके CH, ये जो पर्टिकुलर CH है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द O ग्रुप्स इन इट्स विसिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खा जाएगा. सो दैट इज व्हाई दिस CH ग्रुप विल हैव अ डीशील्डिंग इफेक्ट. ठीक है. Similarly, if you are having any distortion of the electron cloud also, that will also lead to a de-shielding effect. Okay, any distortion of the electron cloud, any polarization effects will also lead to de-shielding.
सो अल्कोहल, एमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितना बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनके distortions उतने ही better हैं. Okay, they are more better, and thereby the deshielding effect is also better in case of amides, alcohols, carboxylic acids. So if you have any one of these groups, the CH groups neighboring to them will have deshielded effects. So this is the complete NMR range from 0 to 12. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स का क्लियरली आपको देख सकते हैं आप. तो CH ग्रुप्स जो नॉर्मल मिथाइल ग्रुप का CH होता है, मेथिलीन या CH, उनका सब वही 0 to 1 के रेंज में आ जाता है. एनी एरोमेटिक रिंग का जो CH है, ठीक है, CH2 attached with an aromatic ring or attached to any one of these 2 to 3, again shielded range में है. Alkynes CH range में है. 5 के बाद it starts to shift. If you have a alkene bond in conjunction with H, then it comes within 5 to 6 range. Aromatic जो rings के जो hydrogens होते हैं, they are very much de-shielded. We will discuss why in the next classes, but they always occur in the range 7 to 8. They always occur in the range 7 to 8. Similarly, aldehydes and carboxylic acids are very much de-shielded, and they occur at very high downfield ranges, that is 9 to 10 and 11 to 12. Okay, so आपको ये देखना है कि कितने bonds के बाद you're considering a shielding or de-shielding proton. So here is the guideline: 3 sigma bonds away. अगर 3 sigma bonds के बाद आपको कुछ है, जैसे कि ये 6 वाला कार्बन, will it be affected by this nitrogen? No, it won't be affected because it is more than 3 sigma bonds away. So here you can see which one will be shielded and which one will be de-shielded. Also hydrogen bonding, जितना भी hydrogen bonding होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, सो डीशील्डिंग इफेक्ट विल बी फॉर्म्ड. वहां पे अपने आईआर अब्जॉर्प्शन में यू हैव जस्ट सीन दैट हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन lower the wave numbers because of the decreasing strength of the bond. So what is decreasing strength of the bond? The electron density is decreasing. So here also the electron density will be decreasing, but it will be in favor. So the proton will experience more magnetic field and will appear downfield. So hydrogen bonding causes de-shielding and has effects of downfield behavior. So I'm going to stop here. So we're going to stop here now, and we have just started on NMR spectra. We will be continuing tomorrow, and we'll be completing NMR spectra, and we'll be starting on mass spectra tomorrow. Okay? So I hope you will read about these concepts from your study material, and if you have any doubts, you can mail them to me. I am also going to give you some resources here. This is my mail ID. You can mail me here. Apart from your traditional textbooks, you can also read some of these. I'm going to give you some web resources. Please have a look at the links that I'm forwarding now. Some problems from IR spectroscopy also I'm giving. You can practice the problems from these. Please look at the chat box. You can copy these and you can access these documents, and you can practice some problems from this. This is also for your higher level understanding. The rest you are getting from your study material as well. जितने problems आप लोग practice करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. Look at more diagrams, practice more diagrams, start writing long answer type questions for different types. So tomorrow we didn't have much time today to discuss more questions, but tomorrow I'll be dealing with some previous year questions from both IR and NMR as well. We will discuss those first, finish up with NMR, and then go over to. Okay. So thank you everyone. We are going to wrap up this class now. So you can just copy down these links, and if you have any doubts, you can mail me on the mail address that I have given you. Okay. Thank you.